Hello, welcome you all. My name is Suman. This is uh, hello all. My name is Suman. I'm from IIT Kanpur. Right. Today we will be discussing some questions of physics, right, which you have asked in your chat box. This will be our session 3 in physics. Today is 69. You can see the session is called session brought to you by Sathi and Tutor AI and IIT Kanpur. Mhm. Let's start. So here I am. My name is Suman. I'm from Department of Mechanical Engineering from IIT Kanpur. I'll be discussing the question that we have asked in our chat box, right? So I request you guys to ask all your doubts in our chat box. Sathi, Tutor AI. Okay. Okay. The first question that we have is impulse, right? So first of all, what is impulse? So before knowing impulse, we're supposed to know what is impulsive force, right? So there are forces, right? You know what is forces? You know about force. क्या होता है? This force is nothing but the rate of change of momentum. ये न्यूटन का सेकंड से आ जाता है कि force is nothing but rate of change of momentum. But force जो आप और तो गहराई में पढ़ोगे, then you're gonna find a new type of force, a new variant of force that is called impulsive force. That is called impulsive force. So what is impulsive force? Impulsive forces, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं, then this is it has large magnitude, but acts only for a small duration. A small duration. ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है. जैसे मान लो कि समथिंग अराउंड 50,000 न्यूटन. नॉट इतना ज्यादा नहीं होता है. 20,000 10,000 मतलब हाई बहुत मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है. बट ये जो बॉडी पे एक्ट करते हैं बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, राइट? इट जस्ट एक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन. इन दिस टाइप्स ऑफ फोर्स इज कॉल्ड impulsive forces. दो क्राइटेरिया impulsive force का. पहला क्या है आपका? The first one is it must has a large magnitude. The second one, what? It has to act for a small duration, very small duration. और सबसे मेन बात क्या है? मेन पॉइंट ये है कि जब impulsive forces सिस्टम में आ जाते हैं, देन आपके क्लासिकल मैकेनिज्म में दो फोर्सेस को हटा दिया जाता है. Like you can say, no, suppose I'm just saying that 1 lakh and you are having 1 lakh, I'm giving you 1 rupee, right? And the second point, I'm gonna not give you 1 rupee. I'm gonna ask you कि कौन सा बड़ा है. So you can say कि हाँ 1 लाख 1 रुपए तो ज्यादा है, obvious सी बात है. But you know, as compared to 1 lakh rupee, one is very less, right? So you can ignore that. Like that only. जब भी हमारे सिस्टम में impulsive force का एप्लीकेशन आएगा, बस जब भी impulsive force जनरेट होते हैं, तब हम दो फोर्सेस को ऐसे नेग्लेक्ट कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स. हालांकि बहुत सारे और भी फोर्सेस है, पर 11 के लिए जेई फॉर जेई मेन ये दोनों फोर्सेस होते हैं. ठीक है. सो यू कैन इग्नोर दिस फोर्सेस. मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि आप जो ड्रॉ करोगे एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, उस फ्री बॉडी डायग्राम में आपका ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स को शो नहीं करना होगा जब भी आपका इंपल्स फोर्स आएगा. ठीक है. इससे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे इंपल्सिव फोर्स आते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका? एक्सप्लोजन. ठीक है. एक्सप्लोजन एंड फायरिंग. ठीक है ना. से बम, लाइक सेंटर ऑफ मास में आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली कि एक मास रहता है, वो फट गया. half of the mass is goes in this direction, another half is going in another direction, and you're supposed to find the distance between them. तो बहुत से सारे वो सेंटर ऑफ मास के सवाल है, वो उसमें नहीं जाएंगे अपन. Let's just stick to this impulsive forces, right? ठीक है. So this is called impulsive forces, right? It's very simple. Let's talk about impulse. Okay. तो जब जहां पर भी आपका इम्पल्सिव फोर्सेस आता है, वहां पर वहां अदर पॉइंट मोमेंटम आता है,
उसी को हम इम्पल्सिव बोलते हैं. दिस इज द वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक डेफिनेशन, राइट. व्हेनेवर देयर इज ए इम्पल्सिव फोर्सेस इनसाइड ए सिस्टम, वो क्या क्रिएट करते हैं ना, इम्पल्स क्रिएट करते हैं. मतलब आर यू गेटिंग दिस वन? अगर आपके पास फोर्स है देन यू कैन हैव मोमेंटम. अगर आपके पास इम्पल्सिव फोर्स है देन यू कैन हैव इम्पल्स. ठीक है. इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इस डायरेक्शन इम्पल्सिव फोर्स के डायरेक्शन नहीं होता है. लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट. लेट्स जस्ट सी न्यूमेरिकली. So you are having force equal to the rate of change of momentum, ठीक है, dv by dt. This implies what? Not this one. This implies what? F dt will be equal to dp, right? So on integrating both the sides, this you're gonna have p final minus p initial will be equal to integration of 0 to t f vector into dt for a small direction. So this term is called, no, it's a whole term, not this integration, right? Where F is a impulsive force. F is what? Impulsive force. ठीक है. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. जैसे व्हाट आर द पॉइंट्स? द पॉइंट्स आर लाइक कि आपका जो फोर्स है इज डिनोटेड बाय J वेक्टर. ठीक है, बाय J वेक्टर. एंड लेट्स जस्ट फाइंड आउट दिस यूनिट. यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट इज सेम एज ऑफ मोमेंटम. दिस इज इक्वल टू व्हाट? kg मीटर पर सेकंड. ठीक है. तो सिंपल अगर मैं लिखूं तो J इज इक्वल टू इंटीग्रेटर ऑफ F डॉट dt. ठीक है, इंटीग्रेशन है. ठीक है. So suppose you have a graph of force and dt like this, and this it is saying in the question the F is an impulsive force. Then what are you gonna find out? Then you're gonna see if this is the graph like this, then the area under this curve, this will be impulse m dot dt. This area will be equal to here impulse. ठीक है. All good, all set, very good. Moving next. So next the question I have, there are some questions, मतलब 3-4 क्वेश्चन थे. मतलब how to deal with projectile questions, how to derive projectile questions, what are projectiles. तो मैंने सभी को एक ही क्वेश्चन में मैंने उसको समराइज कर लिया. एंड I will just explain the whole projectile motion in very briefly to you, right? So first of all, what is projectile motion, right? तो आपने जैसे 11th में एंटर किया, आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया रेक्टिलिनियर मोशन से. हालांकि उससे पहले मैथमेटिकल टूल्स कराया होगा, बट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक स्पेसिफिक, आपको पहले इंट्रोडक्शन कराया गया होगा पहले रेक्टिलिनियर मोशन से, राइट? और रेक्टिलिनियर मोशन सबको पता होगा, वो 1D मोशन है. रेक्टिलिनियर मोशन कैसा है आपका? रेक्टिलिनियर मोशन इज ए 1D मोशन. ठीक है. अब आता है आपको जब मोशन इन 2D. जब मोशन इन 2D में हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. तब आता है प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन. ठीक है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि हम 11 की साइंस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं. दैट इज फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, राइट? देन फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड, थर्ड क्या है आपका? इंक्लाइन. और हमेशा याद रखना इस तीनों में, इस पूरे प्रोजेक्टाइल की चैप्टर में हम मेनली 3-4 फॉर्मूले, तीन चार पॉइंट्स को, 3-4 वर्ड ही कह सकते हैं, 3-4 फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं. जैसे कि फर्स्ट थिंग दैट वी डिराइव इज टाइम ऑफ फ्लाइट. सेकंड वी गो फॉर h max, that is maximum height region. थर्ड वी गो फॉर रेंज. और कुछ है क्या? नहीं, दिस मच ओनली. ठीक है. मेनली हम और भी है, व्हाट्स द टाइम ऑफ ascent, इक्वल टाइम ऑफ descent, and that you know differs.
बट मेनली हम इस तीन के जस्ट ट्राई टू फाइंड द फॉर्मूलाज फॉर दिस थ्री पॉइंट्स, राइट? ठीक है, so this is and if I go for writing the time of flight formula, अगर मैं फॉर्मूला की तरफ जाऊँ then सभी में डिफरेंट डिफरेंट आएगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड. तो ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या होगा, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाएगा. From ground to ground will be equal to 2u sin theta by g. And talking about h max, to be equal to u square sin square theta by 2g. And talking about range, to be equal to u square sin 2 theta by g. ठीक है. सो ऐसे ही बहुत सारे सवाल आएंगे आपके. ऐसे ही व्हाट यू कैन से दिस वन, ऐसे ही आपके बहुत सारे डेरिवेशंस आएंगे. ठीक है, आई होप यू गेट दिस. और नेक्स्ट दैट इज सवाल वी हैव इट, how to solve the numericals if the topic is projectile motion. So how can solve, right? Listen, तो अगर हम फॉर्मूले मिल जाए, राइट, इफ यू गो फॉर फॉर्मूला, तो ऐसे लोग बच्चे क्या करते हैं ना, they just memorize all the formulas, right? Just memorize the formula. But I just want you guys to know कि अगर आपको प्रोजेक्टाइल में दिक्कत आ रही है and you are an expert in 1D motion, that is rectilinear motion, then मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक तरीका जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ. सो थोड़ा ध्यान दीजिए. आप क्या करो, जो 2D मोशन है, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसको तोड़ दो टू डिफरेंट 1D मोशंस, 1D एंड 1D. एक को डील करना है एक्स एक्सिस में, एक को डील करना वाई एक्सिस में, राइट? जब आप ये करना सीख जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ओ ये तो बहुत इजी था, राइट? लाइक अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्म डेरिवेशन याद हो, सब आई होप कि आपको आपने किया होगा कभी ना कभी, देन यू कैन सी हम क्या करते हैं. देखो प्रोजेक्टाइल ऐसे आता है ना, तो हम क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट में कि this component, let me just change the color. So this component is one direction, and let me take the direction, right? So आपके ये आपका प्रोजेक्ट का मोशन ऐसे जाएगा, ये दिस वन लाइक दिस, ये ऐसे जाएगा. तो हमने क्या कर दिया, उस 2D मोशन को जो कि एक्स एंड वाई में था, हमने उसे तोड़ दिया इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस. जस्ट रिजॉल्व इट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर आपको याद हो, उसका डेरिवेशन ऐसे जाता है कि जब ये जो 1D मोशन है ना, जो वाई डायरेक्शन में जो मोशन जा रहा है, वो कब जाके कितने टाइम में जाके फिर से वापस आएगा इस पॉइंट पे. तो दिस इज द टाइम टेकन फ्रॉम द वाई वेलोसिटी, फ्रॉम द टाइम टेकन बाय द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी टू रीच फ्रॉम ग्राउंड देन अगेन टू ग्राउंड. दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. और क्या करते हैं हम, इसके जो एक्स कंपोनेंट है जो कि ऐसा है, इससे हम क्या कर रहे थे, उस टाइम ऑफ फ्लाइट को मान लो वी, दिस इज थीटा, देन दिस विल बी वी cos थीटा, दिस विल बी वी sin थीटा. हम क्या करते हैं, इस वी cos थीटा को इस टाइम ऑफ फ्लाइट से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो, देन यू विल गेट व्हाट, रेंज. आपको क्या मिल जाएगा, आपका रेंज मिल जाएगा. ठीक है ना, वही ना होता है, क्योंकि देखो द पार्टिकल इज सेम, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वही इट हैज its velocity in two different directions, right? ठीक है. So like this only you can just do it कि अगर आपको 2D में कोई दिक्कत आ रही है, then you can do it, you can just convert to 2D into two different 1D motion, then you can deal with it. ठीक है, all good. So the next question that we have is how to understand the statement of numericals of projectile motion. How to understand, देखो हाँ, how to understand this. So there are certain terminologies there that exist in projectile motion. जैसे कि क्या है, एंगल फ्रॉम द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल. हमेशा याद रखना, अगर आपको एंगल प्रोजेक्टाइल के आगे कुछ भी नहीं दे रखा है, देन यू हैव टू सपोज
देन आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ये एंगल जो दे रहे हैं वो बोल रहे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट। पर क्या करते हैं कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि सवाल में दे रखा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इतना देखते हैं कि वो क्या कर लेंगे ना, उससे थीटा डिग्री मान लेंगे तुम हॉरिजॉन्टल, बट नहीं, तुम्हें उससे आगे ही पढ़ना है। अगर ऐसे दे रखा हो कि द प्रोजेक्टाइल इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल डायरेक्शन, देन हैव टू गो फॉर द वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। तब यहाँ पे 30 होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स या तो जैसे एंगल पोजिशन हो गया, और क्या आता है आपका, और यू कैन से द, और क्या है इसमें, और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, दिस ओके इसमें सुन। और हाँ मतलब, इधर एनी सवाल दैट वी हैव मोशन ना, दिस आई कैन गिव यू ए ब्रह्मास्त्र फॉर पोजिशनल मोशन, ब्रह्मास्त्र कहीं पे भी चलता है, राइट, to solve anything. That from Brahmastra would be y equal to x tan theta 1 minus x upon r. This is the Brahmastra. Y equal to x tan theta 1 upon x minus r. What r is your range, and x and y क्या है, position से, say the position of this point x comma y. Theta क्या है, theta is the angle position. This चलो projectile, ठीक है, all set. Very good. Okay, let's just talk about this another point, that is friction. Like the main question that I got is what is friction, and explain with example. Okay, now let's start it. Right. So the point, देखो पहली बात है, किसी ने मुझे बोला कि सपोज सर आप चल रहे हो, राइट, you're walking means like this foot is there and this is the ground, right. So if you are walking, then आप ग्राउंड पे कितने फोर्स लग रहे हो, आप ग्राउंड को कितने फोर्स दे रहे हो। किसी ने मुझे पूछा कि सर आप चलते कैसे हो, हाउ यू वॉक, राइट। तो किसी ने मुझे बोला कि मैं आई वॉक बाय माय लेग्स। तो बीइंग अ फिजिसिस्ट ये तो आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो आई सर्च फॉर मोर आंसर इन डिटेल्स, देन आई फाइंड आउट कि मैंने कुछ फोर्स दिए ऐसे, दिस विल कॉल, लेट मी चेंज इन द कलर, लेट दिस आई पुट सम फोर्स लाइक दिस एफ, लेट दिस फोर्स बी कॉल्ड आर, राइट। अब न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या होगा, ये फोर्स विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन मुझ पे एक्ट होगा, जो कि ऐसा आएगा, ठीक है। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन फोर्स जो कि ऐसे कुछ आया, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने तोड़ दिया दो डायरेक्शन में, दिस इज वन डायरेक्शन एंड दिस इज अनदर डायरेक्शन, राइट। तो इस डायरेक्शन को मैंने बोल जो कि परपेंडिकुलर था सरफेस के, दैट आई स्टार्टेड टू कॉल नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और जो पैरेलल टू द सरफेस था, right, which is along direction of the motion, not always, this is I starting to call as friction, ठीक है, equal what, friction. So normal reaction and friction. Friction क्या है, friction is a part of reaction force, ठीक है। So there are basically two main theories of friction, that is called, one is called electromagnetic theory, second is a classical theory. This electromagnetic theory says that the particles, whenever there is a contact between two surfaces, the particles of the opposite surfaces, they started to attract each other, right. So they started to attract each other, and you know
there is a generation of a new force, and that new force is called as friction, right? And ये क्लासिकल थ्योरी जो कि 11 में मेनली पढ़ाया जाते हैं, एंड उसी से आपका सब कुछ आ गया। वो क्या बोलते हैं, द फ्रिक्शन इज नथिंग बट द हिली एंड वेली। इफ आई जस्ट चेंज द कलर, या चेंज दिस से friction is nothing but the interlocking of hilly and valley। ठीक है, तो friction is nothing but the interlocking of the hilly and hills and valley। ठीक है, इस पे हम स्टिक करेंगे, we will not go deep into electromagnetic theory, that's a different topic, that's a different, that's a different study, that's a different study, we will not do that, right? सो ये तो हो गया माइक्रो में, बट हम क्योंकि हम 11 में माइक्रो में देखते हैं, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट माइक्रो। टॉकिंग अबाउट माइक्रो, फ्रिक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, that is called static friction, and second one is called kinetic friction, but, or you can say this is called the friction in rest, friction at rest this is called friction at motion। ठीक है, friction in rest and friction in motion, right? So let me just take example, what is static friction? Static friction means this is a very friendly friction, and you can say the friction, this static friction only helps us to work, to to not to sleep मतलब फिसलना, we call it in Hindi। static friction is quite friendly, but right, but kinetic friction is not very friendly, sometimes it's friendly but sometimes not, right? So static friction क्या होता है, देखो suppose you are having a box over here, you're having a box like this, right? और आपने क्या किया, इसको you started to pushing this one, जाओ जाओ ऐसे करके, right? But the box is not moving, right? So मान लो कि आपने अप्लाई किया a force of 50 Newton, but the box is not moving, the box is not moving, so somebody asked me why the box is not moving, right? So let's go to the Newton's first law। क्या बोलता है ये, कि कोई भी बॉडी अपना स्टेट अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर एफ नेट जीरो ना हो। अगर एफ नेट जीरो हुआ तो वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, चाहे वो रेस्ट में है चाहे मोशन है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। गेटिंग दिस वन? तो मैंने अप्लाई किया 50 न्यूटन, बट द बॉक्स इज नॉट मूविंग, right? So I go to the Newton's first law and say why the box is not moving, and he told me that if it's not moving then its f net should be zero। okay, then I draw the FBD of the box, right? मैंने क्या किया, FBD ड्रॉ किया, मैंने फाइंड कि मैंने यहाँ पे तो ऐसे कितना दिया, 50 न्यूटन दिया। इसका मतलब इसको भी ऐसे एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स मिल रहा होगा जो कि इसे आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो जो कि इसका एफ नेट क्या करवा रहा है, इसका जीरो करवा रहा है। And this force, this particular culprit, you can say culprit, no? This particular silence master is called static friction। ठीक है, static friction का फॉर्मूला क्या होता है, this is called denoted by Fs, this is equal to mu s into n, mu s into n। what is n? N is the normal direction, normal reaction। ठीक है, अब देखो सपोज मान लो इससे नो इसे एक दीवार है, एंड यू आर हैविंग दिस इज लाइक बॉक्स है, द बॉक्स इज देयर, आपने ऐसे कोई फोर्स लगाया मान लो 20 न्यूटन का, तो एफएस कितना हो जाएगा आपका, बताओ?
म्यू एस जो कि गिवन होगा आपका, दिस इज कॉल्ड, बताया नहीं क्या मैंने से, दिस म्यू एस, कहाँ हो गया भाई, हाँ, दिस म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टडी फ्रिक्शन। म्यू इनटू एन, एन कितना है आपका, 20 न्यूटन, तो एफ एस विल बी इक्वल टू म्यू जनरली वेरीज फ्रॉम, इट इज नॉट ग्रेटर देन 1, राइट, 0.4 0.3 लाइक दिस ओनली, ऐसे रहता है, और ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द सरफेस ओनली, नथिंग, इस पर डिपेंड करता है सरफेस में, ठीक है, तो म्यू एस इंटू 20, दैट्स इट। ओके, so the moving next, we are having what, we are having kinetic friction, have any question? Don't have. तो kinetic friction में भी उसका फॉर्मूला भी सेम ही आता है, बस सब्स्टिट्यूट चेंज होता है, the F k will be equal to mu k into n, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि let's talk about, मान लो कि आपका बॉक्स है, राइट, दिस इज अ बॉक्स एंड यू आर हियर स्टैंडिंग हियर पुशिंग दिस वन, तो आपने क्या किया, आपने देखा कि इसका जो फोर्स है, राइट, आपने 50 लगाया, बॉक्स ने मूव नहीं किया, आपने 60 लगाया, 70 लगाया, तो जैसे आपने 100 पे गए, whenever you this 100 न्यूटन it started to moving, ठीक है, तो जब ये मूव करना स्टार्ट हुआ, आपने देखा होगा, अगर आपने कभी ऐसे धक्का दिया होगा, then you can just realize that कि जब once it started now, आपका जो फोर्स है वो कम लगने लगता है, राइट, क्यों, क्योंकि तब वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। अगर मैं इसको जूम करूं तो क्या होगा यहाँ पर, this is the surface of the block and this is the surface of the, this is the hills and valleys of this ground, you can say, ये क्या करता है ना, इसे आगे जाने से रुकता है और ये यहीं पे रहता है, तो बेसिकली दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द surfaces, ठीक है, so whenever there is a relative velocity between the surfaces, then you will have your kinetic friction in the system, ठीक है। जब इंटरलॉकिंग, दिस इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग ऑफ हिल्स एंड वैलीज, so whenever there is a relative motion between this hills and valleys, between this interlocking, then there will be dissipation of energy। आप खुद ही सोचो ना, दो सरफेस घिस रहे, राइट, तो जब जैसे घिस रहे दो सरफेस, तब जाके जो फोर्स आता है, दैट इज, तब जाके जो फ्रिक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। लाइक टिपिकली स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिंग द मोशन, पर ये होता नहीं है, दिस इज नॉट ऑलवेज हैपन, क्योंकि जब हम ब्लॉक डायनामिक्स आप पढ़ोगे, तब टू ब्लॉक डायनामिक्स जो कि फ्रिक्शन का ही पार्ट है, शायद एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर आप पढ़ रहे हो, राइट, टू ब्लॉक डायनामिक्स, देन यू गोना फाइंड आउट कि काइनेटिक फ्रिक्शन भी हेल्प करता है मोशन में, ठीक है। टू ब्लॉक डायनामिक्स क्या होता है, ऐसे रहता है, दो ऐसे यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, कभी वंस यहाँ पे और फोर्स लगाते हैं, दिस इज, दीज आर कॉल्ड ब्लॉक डायनामिक्स, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, ओके, मूविंग नेक्स्ट। नाउ वी हैव व्हाट, बेंडिंग ऑफ cyclists, ये you can say that this is, मतलब फ्रिक्शन, अगर ये फ्रिक्शन का एक छोटा सा सब सेक्शन है, यू कैन से, फ्रिक्शन के बहुत सारे सेक्शन है, जैसे कि फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज द बैंकिंग ऑफ रोड, रोड क्यों बैंक, कभी देखा होगा आपने, जहाँ पे ऐसे टर्न्स आते हैं, यू कैन सी, जहाँ पे आपका क्या आता है ना, रोड, जस्ट नीड टू चेंज दिस कलर, यहाँ पे सपोज ये गाड़ी है, ठीक है, इसी गाड़ी, और मान लो यहाँ पे टर्न है, लाइक दिस टर्न, तो अगर ये इसका जो गाड़ी है आपका,
ये हमने तो अगर ये जो गाड़ी है, अगर इसका इस टर्निंग पे आपने महसूस किया होगा, राइट, अगर ये टर्निंग पे इसका स्पीड स्लो नहीं किया, देन क्या होगा? ये ऐसे चला मान लो, ऐसे नो, इट विल जस्ट गो लाइक दिस। व्हाई? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीन लॉ है ना, मतलब तीन पार्ट्स है ना। inertia first, the Newton's first law is only called na law of inertia. It has what do you can the inertia of direction, inertia of rest, and inertia of motion. So this is due to inertia of direction. तो वही, पर क्योंकि हम लोग हमारे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सारे बाया रोड ही होता है, तो हमने क्या, हम नहीं चाहा कि एक हर एक बैंक पे, हर एक टर्न पे हमारा गाड़ी का जो स्पीड है वो कम हो। For that, what he did, for that, our civil engineers, right, they come up with a new idea of the design of the road. So they started doing what? They started, tilting the road. उन्होंने क्या किया, रोड जो कि पहले ऐसे नॉर्मल था ऐसे, अब उसको क्या किया, ऐसे टेढ़ा कर दिया थोड़ा सा, like this. ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा? दिस इज योर कार, लाइक दिस, ये गाड़ी है। ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से ये होगा कि आपका जो, अगर रेपिड नॉर्मल था, जो कि पहले गाड़ी ऐसे था, नॉर्मल ऐसे था, नॉर्मल का कोई सा भी कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। और जैसे ही आपने रोड को थोड़ा टिल्ट किया, नॉर्मल का एक जो कंपोनेंट, जो कि ये वाला कंपोनेंट है cos थीटा, सपोज दिस इज थीटा, द n cos थीटा started to participating in the centrifugal motion, centrifugal acceleration, right? It started to contributing towards the centripetal acceleration. ठीक है, getting this one, centripetal force आ जाएगा न्यूटन। That's why this is called banking approach. So similarly, only if you talk about this the bending in the cyclist, it is also having the same concept. Like you can see, let me just tell you, you're having your like this, right? So cyclist is like, your cyclist is like this. आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी रेसेस होते हैं ना बहुत सारे साइकिल में, जहाँ पे भी टर्न्स आते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, ऐसे झुक जाते हैं एक टुवर्ड्स इट। वाई? Right. Let me just explain you. Suppose this angle is theta, right? तो नॉर्मल डायरेक्शन कैसे आ जाएगा? वीडियो बनाओ इसको, पहली बात दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और आपका ऐसे कुछ फोर्स आ जाएगा जो कि बाद में देखेंगे, ठीक है। So this is थीटा, देन क्या होगा, इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा, n cos थीटा। ओके, दिस इज योर n डायरेक्शन। ओके, वेरी गुड। अब क्या होगा, this n sin theta, it has to be equals to what? mv square by r, m into v square by r, right? This implies what? Now v, ठीक है, और क्या है नीचे, mg भी था नीचे, and this is the first equation. Second equation what? Now n cos theta has to be equal to m into g. So we're having two equations. That is what? N sin theta that must be equal to mv square by r, and n cos theta should be equal to mg। n sin theta को आपका mv square by r, mv square by r क्यों होना चाहिए बताओ? अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में, अगर आप सर्कल में घूमना चाहते हो, अंदर बैंड हो रहा है, मतलब सर्कल ही नहीं है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के आपका बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर नहीं आएगा तो आप टर्न नहीं कर पाओगे। सो टू टर्न यू नीड ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, और यहाँ पर वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? दिस इन साइन थीटा, ठीक है। अब सिंपल से बात करो, डिवाइड कर लो, ना tan थीटा इन sin थीटा पे n cos थीटा,
So tan theta equal to m got दिया v square by rc. That is simplest what theta is equal to tan inverse square by rc. Right. This is called bending of cyclist. ठीक है. Suppose मतलब कैसा है देखो R and G आपको पता होगा पहले से ट्रैक का रेडियस ट्रैक. अच्छा, how many of you are thinking that the track will be circular one? हाँ, circular थोड़ी होगा यार. नहीं, this R is called radius of curvature. I don't know whether you know or not, but it has radius of curvature like it's in the color. Yeah, इसका radius of curvature ऐसा है, it has ऐसा. Suppose कोई इसका ऐसा radius of curvature, it has like this. इसका बहुत छोटा है. You know this one. So these are called radius of curvature. So this R is nothing but it's not the radius of the whole circle. It's the R equal to radius of curvature. जो कि वेरी करते हैं हर एक पॉइंट पे. ठीक है. Let's just talk about elastic collisions in 2D. In 1D, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? कोलिजन दो तरह का होता है, इलास्टिक एंड इलास्टिक. इलास्टिक में क्या होता है? इलास्टिक में आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है. देखो ये बॉल है, दिस इज सेकंड बॉल. इट इज हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी. लेट्स जस्ट assume that be kinetic energy 1 and this kinetic energy be kinetic energy 2, right? So during this is before collision. I talk about during collision. Collision क्या होगा ना? ये जो kinetic energy है, the start the ball जो कि बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट में थे, वो क्या करेंगे? अपना शेप को डिफॉर्म होगा, राइट? देयर शेप्स विल स्टार्ट टू डिफॉर्म. पता नहीं आप लोगों ने कितने से वो वीडियो देखा है जिसमें एक लाइक देयर इज अ गाय राइट ओवर देयर और एक फुटबॉल लेके उसको देन दे आर जस्ट थ्रोइंग दैट फुटबॉल टुवर्ड्स हिज फेस. तो उसका फेस क्या होता है ना, डिफॉर्म हो जाता है. आपको देखना चाहिए. एंड दे आई थिंक दे shoot that a particular video with 40,000 you know fps frames per second or something like that. I don't know, but yeah, that's uh, very good to see. Very, you just find it very okay. So at this point, what will happen? No, this kinetic energy is started to converting into potential energy. क्यों? क्योंकि शेप डिफॉर्म हो रहा है. आगे ना, जब भी शेप डिफॉर्म होता है, हाइट में चेंज आता है, आपको क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी आता है. ठीक है. देन फाइनली क्या होगा? ये फिर से टूट जाएंगे. इस बिकम kinetic energy. See, Manu, this is energy. So if this kinetic energy 1 will be equal to kinetic energy 3 and this kinetic energy 2 will be equal to kinetic energy 4, that means what? The change in delta Ke equal to 0, delta Ke equal to 0. If delta Ke equal to 0, then this is called elastic collision. ठीक है. This is the main formula. यहाँ पे आपका what do you call that? E, जहाँ तक मुझे पता है E बोलते हैं. Eccentric नहीं, not eccentric. E दिन सुनते याद है मुझे. I'm not exactly figuring out what that called, but yeah. ठीक है. So moving next, Newton's third law. Here we go. Newton's third law. Newton's third law. Third law क्या है? Third law वही है. If every action has an equivalent opposite reaction now. और क्या वही है? Newton's third law. Like what is the main application of which is Newton's third law? Like Newton's third law ही है जिसकी वजह से रॉकेट्स ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि dm by dt the rate of change of masses, you know, वो भी आते हैं वहां पर. ठीक है.
So this is called Newton's third law. न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आई थिंक सेकंड लॉ को डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं, क्योंकि सेकंड लॉ पे आपका पूरा चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एनएलएम। एनएलएम का पूरी, अब जब जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आप एनएलएम सेकंड लॉ लगाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को हम लोग बहुत कैजुअल लेते हैं, बट फर्स्ट लॉ इज द मेन फाउंडेशन ऑफ द सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, राइट? Let's just talk about this stuff. Power, right? So what is power? Power is nothing but is the work done, is the rate of doing what? What? The rate of doing what? ठीक है, हाँ बस इतना ही है, ज्यादा और बारे में क्या बताऊँ। ये वर्क पर टाइम होता है, और क्या होता है, जूल होता है। जूल पर टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, राइट? ये क्या हो गया, व्हाट हो गया, बस यूनिट क्या है इसका, व्हाट, दैट्स इट। मतलब सब देयर इज सिस्टम, राइट? वी हैव टू डू सम वर्क। तो अगर वर्क करेगा तो एनर्जी डिसिपेट करेगा या फिर एनर्जी गेन करेगा। तो कितना एनर्जी गेन कर रहा है, कितना डिसिपेट कर रहा है, उसके हिसाब से पर टाइम कर लोगे, देन यू कैन हैव द पावर, दैट्स इट। इट्स नॉट एन बिग इशू, राइट? ये आपको आना चाहिए, राइट? आई होप कि आप ये सब जान पाओ। आई एम मूविंग एट dimensional equations, हाँ, yeah, this is quite interesting, right? No, this is, लोगों को पता नहीं, मतलब लोग टिपिकल जेई एस्पिरेंट क्या करते हैं, इसको छोड़ देता है डायमेंशंस में क्या ही हो जाएगा, पर उन्हें पता नहीं कि डायमेंशन ही तो, डायमेंशन से ही आपके ट्रिकी सवाल बन सकते हैं, राइट? लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल। मतलब इसमें क्या होता है ना, देखो, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर देयर इज इक्वालिटी, व्हेनेवर देयर इज इक्वालिटी, इसके राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन से बराबर होना चाहिए, इट हैज टू बी इक्वल। ठीक है, हाँ। So if it is having m1, then it must have m1. If it is having l minus 2, then it must have l minus 2. t0, it has to be t0. Okay, let me just give an example जो कि आया था। हाँ, सवाल करते हैं, ठीक है, उससे पता चलेगा आपको कि suppose there is term called alpha, and then alpha is equal to 2ma upon beta log 1 plus 2 beta l by ma, ठीक है, and we are supposed to find the units of alpha। कैसे करना है इसे, बताओ, how can you do this? क्या दे रखा है आपको, alpha is equal to 2ma by beta। अगर आप चाहते हो तो you can just merge it 1 plus by m आपका मास है, एक एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट थिंग, अल्फा के यूनिट्स के लिए अपने को चाहिए बीटा के यूनिट, क्योंकि हमें नहीं पता कि बीटा है क्या, यू डोंट नो व्हाट इज बीटा। देन व्हाट यू नीड टू डू, कि हम क्या करेंगे, देखो लॉग के अंदर है ना 1 है, और 1 क्या है आपका, डायमेंशनलेस है। तो ऐसा समझो कि आप 1 kg आलू के साथ up to kg aloo you can add, right? Suppose you're having 1 kg aloo and 1 kg tomato, then how can you add this one? We cannot say combine, no. So the units must be same. तो अगर ये डायमेंशन है, then एडिशन के लिए इसका भी यूनिट क्या होना चाहिए, it has to be dimensionless. This means what, 2 beta l upon m into it has no unit, this means 2 into beta into l का क्या हो जाएगा, मीटर आ जाएगा, अपॉन ये इसका मास का केजी आ गया, एक्सप्रेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपल सर, मीटर मीटर कैंसिल किया, तो बीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट,
केजी पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बीटा का यूनिट कितना आ गया? बीटा का यूनिट आ गया हमारे पास केजी पर सेकंड स्क्वायर। अगर बीटा केजी पर सेकंड स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा? 2 × m की क्या है? केजी। एसएस क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन बीटा क्या है? केजी पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट, केजी केजी कैंसिल आउट। कितना आ गया आपका? मास आ गया। ठीक है, सिर्फ मास थोड़ी है, मीटर है ना। तो अल्फा इज ए मीटर, अल्फा इज ए लेंथ, इट्स ए सिंबल ऑफ लेंथ। यहाँ पर इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस मैन, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सही से पढ़े होंगे देन, और मैंने भी क्रैश कोर्स में बताया था। यहाँ पे आ जाओ, ब्लू वाला आप आ जाओ। सो इफ यू हैविंग ए इनफाइनाइट शीट लाइक दिस, अगर आपके पास इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट, और अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 सही से पढ़े होंगे देन यू कैन सी, राइट, इफ यू having sigma, the electric field will be equal to sigma upon 2 epsilon naught। ठीक है, इसी को मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मान लो देयर आर की 2 प्लेट्स जस्ट लाइक दिस, और इसको हम मेजूम करेंगे एज ए इनफाइनाइट शीट की तरह। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं तो जाके देखो, जैसे बस लेक्चर देखने से नहीं होगा, यू हैव टू गो ऑन रिवाइज। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं है, बार बार नोट देखो, बार बार जाके just go and visit your notes। सबसे बढ़िया, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे देन यू आर डूइंग द मोस्ट मिस्टेक, यू आर डूइंग ए मिजरेबल मिस्टेक। ठीक है, तो हाँ, तो दिस इज ए प्लस क्यू एंड दिस इज ए माइनस क्यू, माइनस सी मतलब डिस्ट्रिक्ट। So what will happen? This electric field will be equal to sigma by 2 epsilon naught minus of sigma by 2 epsilon naught, so equal to sigma by epsilon naught। ठीक है, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझो कि कैपेसिटर क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि व्हाट इज कैपेसिटर, देन आई एम गोना से कि कैपेसिटर एक इस तरह का मीडियम है, इस तरह का इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, या इस तरह का डिवाइस है, जिससे हम क्या करते हैं, वी स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। जब हम एनर्जी को देखो, अपने को एनर्जी चाहिए, राइट, वी नीड एनर्जी ना, बल्ब चाहिए, फैन घूम रहा है, रेफ्रिजरेटर इज देयर, एसी इज देयर, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी को स्टोर करने के लिए अपने को क्या चाहिए? तो बोलेगा सर बैटरी। अरे बैटरी नहीं, राइट। तो वही कैपेसिटर क्या करता है, इस एनर्जी को स्टोर करता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स में। जब आपके पास ये दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स होंगे तब क्या होगा पता है आपको? इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेट होंगे, इट विल हैव सम इलेक्ट्रिक फील्ड्स जस्ट लाइक दिस, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर करने का दो तरीका है मेन मेजर। फर्स्ट वन इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड वन इज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब आप एनर्जी स्टोर करते हो इन द फॉर्म ऑफ और इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, and that device is called capacitor, and whenever you store the energy in the form of magnetic field, that is called what? बताओ बताओ, कमेंट में लिखना, ठीक है। I just want you guys to write the device names is in comment, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा वरना। ठीक है ना, बाकी फॉर्मूला आ जाएगा इसी में बाय एप्सिलॉन और यू नो फॉर्मूला क्या होता है, q by c kq by 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपेसिटर। इलास्टिक यूनिवर्सिटी कोलिजन, ये आपका मैंने बता दिया। दिस इज इलास्टिक, मतलब वही होता है आपका आपका द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल, राइट। एंड दिस इलास्टिक का मतलब क्या होता है ना, आपका जो
के ई होगा, वो चिपक जाएगा। दिस इज योर ई इज इक्वल टू 0, ई 0, ई 1 होता है, 1 0। आई एम गेटिंग कंफ्यूज, छोड़ो। यहाँ पे क्या होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड प्लास्टिक कोलिजन, राइट। मूविंग एट Ohm's law, we are having Ohm's law. So what is Ohm's law? Ohm's law is nothing but इन्होंने एक बात बताया था कि if for having, मतलब इसका पूरा डेरिवेशन है 12th में, इसका यू विल हैव ए वेरी अर्ली फॉर्मूला फॉर दिस। नॉर्मली 10th में यही पढ़ता है ना, v इक्वल टू आई आर, बट v इक्वल टू आई आर इतना भी इजी नहीं है, राइट। यू विल हैव ए वेरी वेरी लॉन्ग फॉर्मूला इन क्लास 12। ओम्स लॉ उन्होंने क्या बोला कि सपोज यू आर हैविंग ए वेरी लॉन्ग रॉड, राइट। रॉड पता है, तो आपको रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो आप क्या क्या करेंगे, रो एल बाई ए जनरल फॉर्मूला है, रो इंटू एल बाई ए, एल इज द लेंथ, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। तो ओम्स लॉ में बोला कोई बात नहीं, अगर आपका रॉड बहुत लंबा है, मान लो यहाँ से लेके, मैं अभी राइट नाउ आई मीन कानपुर, तो मान लो यहाँ से लेके मैंने दिल्ली तक एक बिजली का तार वो है, राइट। तो वहाँ उसके थ्रू क्या जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी विल गो। तो रो एल बाई ये तो हम कैसे नापते बैठे क्या, नहीं ना, राइट। सो दैट ओम्स give us a good formula that is equal to what, v equal to I into r. So suppose you want to find the r, just then just find the potential difference across this end and find the current flowing through it, and if you divide the both, then you're gonna get your resistance of the wire, ठीक है। Electrostatic force, here you go, electrostatic force, suppose you're having a charge, आपके पास कोई Q1 चार्ज यहाँ पर having Q2 चार्ज, then कूलम्स ने क्या बोला, कूलम्स ने ये बोला कि if you're having Q1 and Q2 and they're apart by distance of r, then the force of attraction or repulsion will be equal to k Q1 Q2 upon r square, right। तो किसी ने बोला कि सर ये the you are talking about force, right। मैंने बोला हाँ ठीक है, फोर्स की बात कर रहा हूँ, then what this do, then the guy told me कि सर force, अगर ये force है then give us the direction, no, मैंने बोला okay ठीक है, I am giving you, so this is equal to k Q1 Q2 by r square into r hat, right। And we know r vector equal to what, r vector equal to mod r vector into r hat. This implies what, r hat equal to r vector upon mod r. So the force, the electrostatic force, the formula for electrostatic force becomes k q1 q2 upon mod r whole square into r vector upon mod r. This will be equal to k q1 q2 upon mod r का whole q into r vector. This is, go on more details. The f vector electrostatics will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 r vector upon mod r whole cube. This is your formula. This is your electrostatic force. So the force that can be attracting, or that can be attract and a repulsive force depending upon the sign of the q1 and q2. Right? If they are like charges, then it's going to repel. If they are unlike charges, then it's going to attract. So Newton's first law, here you go. Oh, here we are. It has main three, 3 points. Law of, it is also called law of inertia. ठीक है, इसका 3 है, there are 3. There is called direction, motion and rest. सिंपल सी बात है, ये देखो मैं बोल रहा हूँ, एक ही बार बोलूंगा, ध्यान सुनना। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि a body will not change its state until unless its f net is non-zero. अगर किसी बॉडी के ऊपर f net 0
नहीं है, राइट, अगर डेफिनेट जीरो नहीं है देन इट विल नॉट गोना चेंजेस, अगर नहीं है, अगर देन इट विल नॉट चेंज बॉडी, मतलब जब तक बॉडी के ऊपर डेफिनेट जीरो है तब तक वो अपना स्टेट नहीं चेंज करेगा, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मोशन पे तो मोशन में रहेगा, अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। इसी डायरेक्शन की वजह से ही ना, पता है आपको सेंट्रिपेटल फोर्स आता है, लाइक यू कैन रिलेट इट, राइट, this uniform circular motion has a having a constant speed but still has a acceleration, why, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको याद रखना। वर्क सर मैंने बोल दिया ना, वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन, ठीक है। हम्म, हाँ हाँ, एफ डॉट डी एस होता है ना, if equal mass into acceleration v dv by ds to ds, तो वही है वर्क इक्वल टू व्हाट, एफ डॉट डी एस। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कितना बताऊं यार, मतलब ये तीसरा सेशन है, मैं पूरे दूसरे से फर्स्ट और सेकंड सेशन में मैंने बता दिया है पूरा इसके बारे में। तो दिस सिंपली से कि मतलब क्लास 1 से लेके 10 तक आप जो पढ़ते हो दैट इज कॉल्ड स्केलर अलजेब्रा, ठीक है। फिर जब जैसे आप 11th में आते हो आपको एक नई अलजेब्रा के साथ इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, तो बोलते हैं कि देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 + 2 4 नहीं होता है, यहाँ पर 3 + 4 5 नहीं होता है, यहाँ पे कुछ अलग ही होता है, क्या होता है तो आप पढ़ने के बाद जानते हो, एंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा, राइट। दिस इज कॉल्ड, दिस वेक्टर अलजेब्रा इज वैलिड फॉर वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि आप 1 से लेकर 10 तक आपको क्या पढ़ाया गया ना मैथमेटिक्स में, 4 ऑपरेशन से, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो वेक्टर अलजेब्रा में भी 4 है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डॉट एंड क्रॉस, राइट। यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है। ऐसे ही मतलब देखो, इन दोनों को कभी ना, यू गाइस क्या करते तुम लोग, इन दोनों को मैच कर लेते कि दोनों बराबर है, नहीं दोनों बराबर नहीं है, दोनों में अंतर है और दोनों में अच्छा खासा अंतर है, ठीक है। सो यूज करने से पहले ना चीज जानना चाहिए आपको। सो वही इसके बहुत सारे वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले से, वेक्टर एडिशन के डेरिवेशन से, उसके सब्ट्रैक्शन की है, आई जस्ट आई ऑलरेडी टॉट दिस, मैं नहीं बताना चाहता फिर से, चलो फ्रिक्शन बता देना स्ट्रेस में, ओके देखो। So yeah, this is the end of this slide. This is IIT Kanpur PK कल library. So I hope you guys कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी डाउट आप you have just put it in the chat box so that I can answer those again on 13 of uh, September. We will be meeting soon. ठीक है, तो जल्दी से पीके लाइब्रेरी देखो एंड या अच्छे से पढ़ो एंड कम टू आईआईटी, राइट, आईआईटी इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज ऑलवेज देयर टू वेलकम यू, थैंक यू। So this is whole line of IIT Kanpur, चलो बाय बाय। थैंक्स।